अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बायोमैकेनिक्स ऑफ लंबर स्पाइन में हम मसल्स पर बात करेंगे। हम मसल की जो मेन फंक्शन है उसकी ओरिएंटेशन है और उसकी जो क्लासिफिकेशन है, यानी हम लंबर स्पाइन की जो सराउंडिंग में मसल्स है उसको हम किस तरह जो है क्लासिफाई करते हैं, कौन कौन से मसल उसमें है, यानी पोस्टीरियर मसल कौन से हैं, लेटरल मसल कौन से हैं, और इसके अलावा साथ साथ इंटीरियर मसल कौन कौन से, इस पर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि व्हाट इज द रोल ऑफ द thoracic और लोअर thoracic और द लंबर pelvic रीजन के मसल का रोल क्या है। सो बेसिकली यहाँ पे जो लंबर रीजन के मसल्स है, न सिर्फ ये कि ये मोमेंट प्रोड्यूस करते हैं, यानी वी नीड इन डेली लाइफ, वी नीड एक्सटेंशन, वी नीड फ्लेक्शन of that back span in daily life activities. But at the same time, these muscles of the lower thoracic or the lumbar region, the lower back, they also produce and provide stability due to the trunk during movement. Specifically, suppose when we are bending to and we are going to touch our toes, at that time the muscles they are going to provide the stability. If we are carrying some weight, so वहाँ पे ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर देती हैं। अब यहाँ पे हम आगे डिस्कस करेंगे कि कौन से मसल जो हैं ये एक्चुअली दे आर स्टेबलाइजर और कौन से ऐसे हैं जो दे आर काइनेस्थेटिक एडिक्टिव, यानी वो एक्टिव वो मूवमेंट प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे एक चीज जो यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि कुछ ऑलरेडी हमने क्लास में इसके बारे में डिस्कशन भी की थी कि एक टर्म होता है मोमेंट आर्म, विच इज एक्चुअली द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दैट इंस्टेंट एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द लाइन ऑफ मसल या द लाइन ऑफ पुल जो है। अब यहाँ पे लंबर रीजन पे अगर हम इंस्टेंट एक्सिस ऑफ रोटेशन पे बात करें, सो दैट इज somewhere located at the posterior one third of the disc and vertebral body. सो अब मसल जितना इसके करीब होगा, इसकी डिस्टेंस जितना कम होगा, उतना उसके लिए मुश्किल होगा कि ये वहां पे मूवमेंट काज कर सके एंड मूवमेंट्स जो है ये एग्जीक्यूट कर सके। इसलिए वहां पे इनके लिए फिर ज्यादा आसान होगा कि ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करे। और जितना ये पोस्टीरियरली प्रेजेंट होगा, जितना ये इंस्टेंट ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन से जितना ये दूर होगा, उसका मोमेंट आर्म जो है ये ज्यादा होगा। तो इसके लिए फिर वहां पे मूवमेंट कराना, that may be the lateral movement, there may be the posterior movement, there may be the interior bending, कोई भी movement जो है, so higher the distance from that instant axis of rotation, easy for the muscle will be to move that region, that area. So इसलिए यहाँ पे lumbar region के मसल जो है, या we can say the low back के मसल जो है, they can be stabilizers, the active stabilizer, डायनामिक स्टेबलाइजर भी इनको कहा जाता है, क्योंकि पैसिव स्टेबलाइजर दैट उसको जो हमारे लेगमेंट से कैप्सूल है, ये तमाम के तमाम जो है ये दीज आर द पैसिव स्टेबलाइजर्स। ऑन द अदर हैंड मसल जो है दीज आर द डायनामिक स्टेबलाइजर आर द एक्टिव स्टेबलाइजर। तो हम इस पर बात करेंगे कौन कौन से मसल जो है वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं और कौन से मसल जो है ये मूवमेंट काज करते हैं। So the muscle of the lower thoracic and lumbar area that serve the role of producing and controlling movement of the trunk. That is one function of these muscles. At the same time, they provide the stability to the trunk during movement of the lower extremities, and they also play a key role in resisting the extensive forces which affect the area. That may be the compressive forces, there may be the tensile forces, there may be the shear forces, ये मुख्तलिफ forces है। अब shear forces जो हैं these are in the interior or posterior direction. Tensile forces they are the twisting forces, and the compressive forces they are just in the downward direction just because of the weight of the entire thoracic region, the cervical region, the head, the arm, the shoulders. So ये तमाम weight जो इसके ऊपर आती हैं
And that is one of the reason as well कि why there is gradually increase in the area of the vertebral body. जैसे हम cervical से thoracic पे आते हैं, thoracic से फिर lumbar पे आते हैं. So the area of the vertebral body that increases because just that is the demand of that region की ये. और जितना नीचे हम जा रहे हैं वहां पे चूंकि वेट ज्यादा हो रही है, बेयरिंग ज्यादा हो रही है, इसलिए ताकि इसको बियर कर सके. सो एक रिसर्च के मुताबिक तकरीबन हर सेगमेंट कि जैसे हम नीचे जा रहे हैं देयर इज ऑलमोस्ट 11% इंक्रीज इन द दैट एरिया ऑफ द वर्टेब्रल बॉडी. तो ये जो है यहाँ पे ये जितनी भी कंप्रेसिव फोर्सेस या टेंसाइल फोर्सेस है, शियर फोर्सेस है, या मसल की जो यहाँ पे फोर्सेस इस पे ऊपर आते हैं, इन तमाम को जो है ये रीजन जो है ये रेजिस्ट करती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द स्टेबलाइजर मसल्स. So चलते हैं about the classification of the all muscles surrounding the lumbar region. These muscles they can be divided into three categories, major groups: the posterior muscles, the lateral muscles, and the anterior muscles. Posterior muscles, these are all those muscles which are located just posterior to the transverse process of the lumbar region. The lateral muscles are those muscles which are attached to the transverse process of the lumbar region, and anterior muscles, the group of muscles which are located interior to the transverse process. इसी तरह इसकी फंक्शन वाइज भी हम ये तीन जो हैं कैटेगराइज कर सकते हैं कि posterior muscles basically they are the extensors of the lumbar region. The lateral muscles, they are the side benders or the lateral benders. The side flexor or the lateral flexor of the lumbar region. And the interior muscles, they are the flexor of the interior flexor of the lumbar spine. यानी हम जब bend हो जाते हैं, we are going to touch our knees. So वहाँ पे जो हमारी bending होती है, that is because of the action of the that interior muscles. सो हम अभी पोस्टीरियर मसल्स, लेटरल मसल्स इसको हम डिस्कस करेंगे, इसकी ओरिएंटेशन क्या है, इसके फर्दर कौन कौन सी मसल इसमें है, और बाकी जो इसकी कुछ पैथोलॉजी वाइज भी हम डिस्कस करेंगे. स्पेसिफिकली लेटरल मसल में जो क्वाड्रेटस लंबोरम है, इसका हम इंशाल्लाह जिक्र करेंगे, डिस्कस करेंगे. सो पोस्टीरियर मसल्स, सबसे पहले जो है इसकी मसल्स के ऊपर जो शीत होती है, जो फेशिया होता है, वी कैन से दैट दैट इज द मोस्ट superficial or the most posterior component of this muscular section of the lumbar region, and that is actually known as the thoracolumbar fascia because it is present at the, covering the area of the lower thoracic as well as the lumbar area. So that thoracolumbar, which is simply known as the TLF, this thoracolumbar fascia is the most superficial structure in the lumbar area, or we can say that this is the this is the posterior most structure of the lumbar area in the muscle section. The TLF surround the erectus spinae and the multifidus muscle of the lumbar area, and the couple action of the latissimus dorsi, the contralateral gluteus maximus, and the tension through the TLF. They will compress the lumbar spine during the movement, and hence they provide and gives the stability. So यहाँ पे we can see here there are two muscles. They are contralaterally coupling the gluteus maximus on one side and latissimus dorsi on the other hand. These two muscles they will work together to provide the stability and compress the lumbar spine, especially during if we yes, you can see during this moment of that gap swing. This there is a contralateral couple action which are going to compress the lumbar spine. Latissimus dorsi, this is the broadest muscle of the back. Latissimus mean, one is the lattice which mean the broad, latissimus mean the broadest, and dorsi mean the back. So the broadest muscle of the back. Gluteus maximus, the largest muscle of that buttock region. These two, they work together to produce that stability to the lumbar spine. And this white color, ये जो diamond shape आपको नजर आ रही है, that is actually the thoracolumbar fascia, the TLF, which is covering the lower thoracic region as well as the entire the lower thoracic region and the entire lumbar region.
और ये जो thoracolumbar fish है, बेसिकली दिस इज एपिनेउरोसिस, जो यहाँ पे लेटिसिमा डॉर्साई एंड ग्लूटिस मैक्सिमस इनको इस तरह कनेक्ट कर देते हैं। सो दैट इज एक्चुअली कंट्रोलेटर स्लिंग भी उसको कहा जाता है। अब thoracolumbar fascia जो है द TLF की बात की तो इसकी थ्री लेयर्स होते हैं, द posterior लेयर, द मिडल लेयर एंड द इंटीरियर लेयर। पोस्टीरियर लेयर जो है ये प्रेजेंट होता है दैट, और इसके अगेन जो है टू टू लेमिना है, सुपरफिशियल एंड डीप लेमिना, but posterior layer जो है it is just present posterior to the that erectus spinae. On the other hand, as we can see here, this is the erectus spinae. These are the muscles erectus spinae, and this layer ये white color जो आपको नजर आ रही है, that is actually the posterior layer of the thoracolumbar fascia. So that this is the posterior most, or we can say that in muscle section, this is the most superficial part of the posterior region. यहाँ पे हम अगर इन तीन muscles को देखें, so these are the transverse process on the both side. Muscle vessels which are present posterior to this transverse process, they are the posterior muscles, and the muscles which are attached to the transverse process of the lumbar, this is the lateral muscle, and the muscles which are located just interior to this transverse process, they are the interior muscles. This is the psoas major, this is the quadratus lumborum muscle, and these are the posterior muscle, both superficial and the deep. This is the deep muscle, the transverse spinalis group of muscle. One of them is the multifidus, and these three muscles, the erector spinae, one of them is iliocostalis, longissimus, and as well as the spinalis as well. But spinalis this is less developed in the lumbar region, and that's why some in some cases in some textbook it has been not counted as the part of the erector spinae in the lumbar region. Erector that spinalis muscle is well developed in the thoracic region. The middle layer of the thoracolumbar facial layer, that layer pass between the paraspinal muscles, or we can say that the posterior muscles. Paraspinal, the word para means side and spinal obviously means spine. So the muscle which are present on the both side of the spine, that is known as the paraspinal muscles, group of muscles. So the layer of the thoracolumbar fascia जो paraspinal muscles और quadratus lumborum के दरमियान गुजरती हैं, that is actually known as the middle layer. While interior layer, this is actually the part of the thoracolumbar fascia which passing interior to the quadratus lumborum and ending by turning posterior to pass between the quadratus lumborum and the psoas. That is actually the interior layer. This is ये present होता है at the interior to the quadratus lumborum, और इसके बाद जो है ये फिर थोड़ा सा posterior turn ले लेता है और वापस यहाँ पे आके मिल जाता है with the junction point of the three layers, the posterior layer, the middle layer and the interior layer. This layer, ये जो आपके सामने which is equally interior to the side and interior of the psoas major है, this is not the part of the thoracolumbar fascia, that is actually considered the part of the abdominal fascia, abdominal aponeurosis. So these three layers, the posterior layer, the middle layer, interior layer, they can be demonstrated here as well. These three layers, one, two, and three, these are three layers which make the thoracolumbar fascia. Posterior layer is the most superficial that present posterior to the paraspinal muscles, the rectus spinae and the multifidus, and then it's run anteriorly, and then it combine with the continue with the middle layer, which is present between the paraspinal muscles, including the multifidus and other transverse spinalis muscles, and these erectus spinae, and present between the paraspinal muscle and the quadratus lumborum, and the anterior layer is present between the partially present between the psoas major and quadratus lumborum, and then it turns posteriorly just at the lateral side of the quadratus lumborum. Again, these are the back muscles, these are the lateral muscles, the quadratus lumborum, these are the interior muscles, the red color, the psoas major, and these three yellow lines, these are actually the three layers of the thoracolumbar fascia.
the posterior layer, the middle layer and the anterior layer, and this layer यहाँ पे जो सास मेजर के सामने होता है, that is actually the part of the abdominal fascia, abdominal epiglottis. एरेक्टस स्पाइनाई की बात कर ली, जैसे हमने कहा कि ये तीन मसल्स होते हैं, लॉन्गिssimus, iliocostales and spinalis, but the spinalis muscle and as well as the this is not much developed in the lumbar region. The longissimus, which simply mean the longest muscle of the erector spinae, this is actually दरमियान में से जो यहाँ से एक्सिपट से शुरू होती है और फिर नीचे यहाँ पे आके ये sacrum के साथ अटैच होती है. So this is actually the longest muscle of the back, which is of that area, portion of that longissimus present in the lumbar area, that is known as the pars lumborum. The portion of the that longissimus muscle present in the thoracic region, that is known as the pars thoracis. Present in the cervical region, this is known as the pars cervicis. And then the part which originate in the cervical region and attach on the mastoid process of the skull, that is actually known as the longissimus capitis. So these are the longissimus capitis, longissimus cervicis, longissimus thoracis and the longissimus lumborum. So ये जो lumborum है, thoracis है, cervicis है, capitis है, ये उसकी different region की वजह से, otherwise it is a single muscle present from the sacrum till the mastoid process of the skull. That's why this is known as the longissimus muscle, the longest muscle of that back. Iliocostalis muscles, we can see here, that is the muscle which is present between and which superiorly attached to the costals, between the ribs, and inferiorly attached not only to the sacrum but also to the ilium bone. So that's why this muscle known as the iliocostalis, with muscle attached between the ilium and the ribs. So that is iliocostalis. Spinalis, this is the medial most component, medial most portion of the rectus spinae. यहाँ पे मेंशन नहीं है, but that is the medial most. So अगर यहाँ पे इनको from lateral to the medial attach करें, तो आप इस तरह भी इसको याद कर सकते हैं कि I love the spine. So I mean iliocostalis. This is the lateral most muscle. Then the longissimus. This is actually the middle one, and spinalis is the medial one. So these three muscles are present on the both side of the spine: the iliocostalis, the longissimus, spinalis. Then again the spinalis, then the longissimus, and then the iliocostalis. So this is actually the portion of the paraspinal muscles. The entire erector spinae that is divided into two layer, or we can say two portion, two areas, just on the basis of their function: the superficial layer and the uh, deep layer. तो डीप लेयर सुपरफिशियल लेयर, जैसे हमने स्टार्ट में डिस्कस किया कि एक्चुअली यहाँ पे उसकी जितनी डिस्टेंस ज्यादा होगी इंस्टेंट एक्सिस ऑफ रोटेशन से, उतना ही उनके लिए आसान होगा. अब सुपरफिशियल लेयर चूंकि ये पोस्टीरियर मोस्ट है और इनका डिस्टेंस जो है ये डीप लेयर ऑफ द रेटिना से ज्यादा होता है, सो दैट्स व्हाई दे आर बेस्ट made for and they are fit into the standing the back rather than providing the stability. So that superficial layer that runs from the ribs and thoracic transverse process to form the bellies of these muscles. These muscles have long tendons which join together to form the ESA, the erector spinae epiglottis, which attach into the spinous process of the lower lumbar spine, the sacrum and the iliac crest. तो ये तमाम मसल्स की बात कर रहे हैं जो रिब से स्टार्ट होती हैं और नीचे आके फिर सैक्रम और इलियक क्रेस्ट और लंबर स्पाइन पे अटैच होती हैं. So these are the erector spinae muscles. We can see here this is the spinalis muscle. और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि this is actually the end of that spinalis muscle. In the lumbar region there is no such spinalis muscle, but on the other hand, if we can see here कि one of the strongest muscle in the back of this erector spinae is the iliocostalis muscles, जिसका मेन बिली जो है ये lumbar region पे है. अब ये मसल जो है दिस इज क्वाड्रेटस लंबोरम, ये एक्चुअली यहाँ पे
लेटरल मसल है। तो यहाँ पे ये तीन मसल जो है यानी स्पाइनलिस, देन दिस इज द लैंगिसिमस, और यहाँ पे लैंगिसिमस को देखे तो इसकी जो टेंडन है ये लंबर एज वेल एज यहाँ पे सेक्रम के साथ अटैच होते हैं, और फिर ये रिब्स पर भी अटैच होते हैं, और साथ साथ फिर यहाँ से ये दोबारा ओरिजिनेट होती हैं और यहाँ पे मिस्टाइड प्रोसेस पे अटैच होती हैं। सो बेसिकली इसका जो वो पार्ट है इन द लंबर रीजन, which mean we can say that the longissimus lumborum. So longissimus lumborum that actually originate from the sacrum and then insert या superior attach on the lumbar region. So ये जो lumborum thoracis और cervix कहा जाता है, तो this is on the basis of their superior attachment. यानी अगर हम यहाँ पे लंबोरम पार्ट इलियोकास्टेरिस का, दिस इज द इलियोकास्टेरिस, ये जो मसल है ये इलियोकास्टेरिस है, which is जैसे हमने कहा which is the main muscle of the lumbar rectus spinae. सो इलियोकास्टेलिस ये मसल जो है ओरिजिनेट होगा यहाँ पे स्पाइन, ये सॉरी इलियक स्पाइन as well as the iliac crest as well as the sacrum and somehow from the lumbar lower lumbar spine as well, और फिर ये नीचे जाके जो है ये एट द अपर लंबर रीजन पे अटैच होगा। सिमिलरली इसकी लंबर रीजन से अटैच होके ये थोरेसिक पे जाएंगे। सो ऊपर जो थोरेसिक पर अटैच होते हैं दैट इज एक्चुअली नोन एज द थोरेसिस पार्ट, और फिर थोरेसिस से अटैच होके सर्वाइकल पे जो टर्मिनेट होते हैं दैट विल बी कॉल्ड इज द सर्विसेज, और फिर यहाँ पे सर्विसेज से स्टार्ट हो जाते हैं एंड दे टर्मिनेट ऑन द head and the skull, so they will be called as the capitis. जैसे अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लैंगिसिमस कैपिटस है, तो लैंगिसिमस कैपिटस जो है ये सर्वाइकल स्पाइन से वो इंफीरियरली शुरू होगी एंड दे विल मूव एंड विल रन अपवर्ड, will attach at the head with the capit, which that's why that is known as the longisimus capit, यानी skull के साथ attach है। इसी तरह लैंगिसिमस सर्विसेज जो है ये they will attach from the thoracic region and then will end up in the cervical region. These are the spinalis portion, spinalis capitis, spinalis cervicis, यानी आप capitis spinalis capitis को देखें अपर thoracic and यहाँ पे cervical region स्टार्ट हो के ऊपर यहाँ पे स्कल पे अटैच होती है spinalis capitis. These are the spinal cervices जो terminate होते हैं in the cervical region. This is the spinalis thoracis. Again and यहाँ पे lumbar region पे these muscles जो है they are not so developed. So muscles जो है यहाँ पे spinalis muscles, longissimus muscle and iliocastellus muscle, इन तीनों को combined कहा जाता है directed spine. The superficial layer that is actually they're having the long movement arm and that produces the extension of the thoracic and the lumbar spine when contracted bilaterally and are considered as the primary extensor, the prime mover for the entire extension of these region. They are also known as the global extensor because they extend entirely the complete region, the lumbar region and the thoracic region. When they are acting unilaterally, they are able to laterally flex the spine and they contribute to the rotation of the spine as well because uh, rotation of the lumbar spine and the lateral flexion of the lumbar spine, they both are couple movements. और जब भी एक हम लेटरल बेंडिंग करते हैं, लेटर सपोज राइट साइड हम लेटरल फ्लेक्शन करते हैं तो हमारा अपोजिट साइड जो है कंट्रालेटरल साइड पे हमारी रोटेशन होगी। अगर हम राइट साइड पे रोटेशन करते हैं तो लेफ्ट साइड पे साइड बेंडिंग होगी। So these two movements, the rotation and side lateral bending or lateral flexion, the lumbar region, they both are couple movements. They always move simultaneously at the same time, but in the opposite direction. It means if rotation is on the right side, so iska partner jo hai, which is actually the lateral bending, they will be on the left side. If the lateral bending is on the right side, then the rotation will be on the, so ये दोनों एक दूसरे के साथ जो है कंबाइनली होते हैं। इसके बरक्स अगर हम फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन को देखें, सो ये पेवर मोमेंट्स होते हैं, दे आर नॉट कपल मोमेंट्स
we can isolatedly flex the lumbar spine and isolatedly extend the lumbar spine without any involvement for other any other movement. So अगर ये दोनों यानी दोनों तरफ पैरास्पाइनल मसल है तो राइट एंड लेफ्ट इरेक्टर स्पाइन अगर ये बायलेटरल एड करते हैं so they will extend the spine, and if one side is actually contracting so same side पर ये lateral flex करेंगी while दूसरा तरफ जो है opposite side ये actually relax होगा, stretch होगा. During the trunk flexion from standing, the erector spinae are responsible for the contracting eccentrically to control the motion. Eccentrically mean they are going to stretch um, and they are going to increase in the length. They are इनकी eccentrically definition ये होती है कि when the length of the muscle increases. However, the extent and the rate of flexion is controlled partially by the eccentric contraction of the extensors with the erector spinae epineuritis and partially by the thoracolumbar fascia and posterior ligamentous system. This posterior ligamentous system has a very major role in controlling the interior bending, specifically the two ligaments, the supraspinous ligament and interspinous ligament, which is actually the posterior most ligament of this posterior ligamentous system. कुछ और लिगामेंट्स भी जो हैं इस सिस्टम का हिस्सा है जैसे द पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट जैसे लिगामेंट ऑफ फ्लेम, लेकिन जो दो लिगामेंट्स है which actually control the lateral bending, that is actually the supraspinous ligament which is present from tip to tip of the spinous process and the interspinous process present between two consecutive spinous processes. So TLF, the posterior ligamentous system, and this extensor along with the ESA, they all work together to control and to restrict the lumbar region after reaching to that 60 to 70 degree of the flexion. The erector spinae work eccentrically until the second two-third of the maximal flexion has been attained. At that point, where the erector spinae become electrically silent. Why? What does it mean electrically silent? Because इसके बाद जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड होगी और लिगामेंट्स प्रोवाइड करेंगी. यानी अगर हम इस पूरी रेंज को हमारी जितनी भी अवेलेबल एनाटॉमिकल मैक्सिमम रेंज है लंबर स्पाइन का बेंडिंग, इसको अगर हम 3 पार्ट्स में इसको हम कन्वर्ट करें सो द इनर रेंज एंड द मिडल रेंज जो है यहाँ पे मसल जो है दे आर वर्किंग इसेंट्रिकली और डायनामिकली स्टेबिलिटी देते हैं. बट व्हेन दे बिकम कंप्लीटली वर्टिकल उनकी जो ओब्लिकनेस है ये खत्म हो जाती है. तो ये मसल जो है फिर यहाँ पे लास्ट एंड पे व्हेन इट इज द लास्ट थर्ड या आउटर रेंज जो है इसमें फिर ज्यादातर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये लेगामेंट्स पर आती है. सो इसलिए इसको इस तरह भी हम कह सकते हैं कि दिस इज एक जिस तरह के न्यूट्रल जोन्स होते हैं. एक होते हैं न्यूट्रल जोन. न्यूट्रल जोन का मतलब ये है कि जहाँ पे लेगामेंट जो है according to that Punjabi, which is a well-known researcher in the biomechanics, elastic zone, the entire region surrounding the lumbar spine that is being divided into two, the neutral zone and the elastic zone. अब न्यूट्रल जोन वही है कि जिसमें अगर एक पर बंदा मूवमेंट करता है तो उसके लिगामेंट जो है ये स्ट्रेच नहीं होगी बल्कि दे विल बी सिर्फ पूरी की पूरी मसल सिर्फ यहाँ पे काम करेंगे. वाइल इलास्टिक जोन वही होती हैं जहाँ पे उसकी जो लिगामेंट्स है दे आर आल्सो बिकम एक्टिव, उनकी स्ट्रेचिंग हो जाती है. और जितना हम दूर जाते हैं यानी हम एक्सट्रीम रेंज पे जाते हैं, हम अगर बेंडिंग पे जानते हैं एक्सट्रीम लास्ट आउटर रेंज पे, या अगर हम एक्सटेंशन में स्पेसिफिकली लेटरल बेंडिंग पे, तो इन तमाम जो एंड रेंज पे हैं वहां पे फिर लिगामेंट जो है दे आर रिस्पांसिबल टू बियर एंड टू प्रोवाइड द स्टेबिलिटी. Because according to that in electromyogram studies, in the last one third of this movement these erector spinae become the silent. Silent mean electrically silent. There is no such activity in these muscle in the uh, last outer one third of this movement. So erector spinae action of the action of the erector spinae superficial layer. This is the erector spinae, superficial erector spinae, or when they are concentrically contract, so they extend the lumbar region.
और जब यहाँ पे इंटीरियर बेंडिंग होती है, इंटीरियर फ्लेक्शन होती है, सो दिस erector spinae, the superficial erector spinae, that just stretch और eccentrically contract होती है, स्ट्रेच होती है, और फिर ये जो है यहाँ पे जो इंटीरियर बेंडिंग है इसको कंट्रोल करते हैं। इसमें ड्यूरिंग दिस मोमेंट ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। इसका मोमेंट आर्म जो है ये ज्यादा होते हैं, यानी सपोज दिस इज दैट इंस्टेंट एक्सिस ऑफ रोटेशन which is actually the posterior one third of the body, हमने पहले डिस्कस किया था। सो ये जो डिस्टेंस है, ये यहाँ पे दिस इज द लाइन ऑफ पुल या द लाइन ऑफ मसल जो है ये है, इसके साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है यानी इंस्टेंट एक्सिस ऑफ रोटेशन से इस लाइन ऑफ मसल तक जो ये डिस्टेंस है, दैट इज एक्चुअली नोन एज द मोमेंट आर्म। ये मोमेंट आर्म जितना ज्यादा होगा उतना ही उसके लिए, इस मसल के लिए, इस रीजन को मूव करना आसान होगा, और जितना ये करीब होगा उतना उसके लिए मुश्किल होगा, एंड दैट्स व्हाई इट्स मच बेटर फॉर दोज मसल्स व्हिच आर nearly located to provide stability to the lumbar region during the movement. इसी तरह जो है erector spinae का जो डीप लेयर है या डीप फाइबर्स या डीप टिश्यूज है इस मसल का, ये इसलिए सेपरेटेड होते हैं सुपरफिशियल लेयर से कि ये दे आर नॉट एक्चुअली इन्वॉल्व इन द एक्सटेंशन ऑफ द लंबर स्पाइन, एंड दीज आर एक्चुअली द ग्लोबल स्टेबलाइजर, ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर देते हैं, क्योंकि इनका जो मोमेंट आर्म होता है ये कम होता है, दैट्स व्हाई दे आर बेस्ट फिट फॉर प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी rather than extending the entire lumbar region. So the deep layer is entirely separated from the superficial layer, and it consists of individual fasciculi with common tendinous insertions. That fascicles arise from the ilium of the posterior superior iliac spine and just lateral to the iliac crest, and course superiorly ऊपर जाते हैं, medial जाते हैं, and interiorly to insert on the lumbar transverse process. These muscles lie close to the axis of rotation, which is instant axis of rotation. Therefore, they don't have sufficient moment arm to be the prime movers for extension, and that's why they provide stability. The oblique orientation of the erector spinae, they exist as posterior shear forces along with the compressive forces, और ये पोस्टीरियर शियर फोर्सेस जो है, ये जो एब्डोमिनल मसल और एज वेल एज जो लॉर्डोटिक कर्व है, कर्वेचर है ऑफ द लंबर स्पाइन, ये इंटीरियर शियर फोर्सेस क्रिएट कर देते हैं। उस इंटीरियर शियर फोर्सेस को काउंटर करते हैं these deep layer of the erector spinae by producing a posterior shear forces. So the magnitude of this posterior shear forces and the interior shear forces, they are equal, but in their direction is opposite. So they just equal each other, and hence stability जो है वहां पे मिल जाती है. In case if these muscles they are weaker, और ये मसल जो है ये उतना shear forces प्रोड्यूस नहीं कर सकती जितना इंटीरियर shear forces होता है, so that may lead to the different instabilities, and then core muscle strengthening and other exercises, specifically the bridging exercises, the quadruped exercises, then they are prescribed for the patient to strengthen their core, because उनकी core muscle जो erector spinae ये जितनी strong होगी उतनी ही जो है उनकी shear forces और ये countering of the interior shear forces ज्यादा होगी, and hence they will be stability at the lumbar region. Due to the orientation, they play a key role in resisting the interior shear forces and give stability. And flexion, it loses its orientation, they become straight. यहाँ पे हमने कहा कि इसका जो oblique orientation है, this is actually the main reason for the producing that posterior shear forces. लेकिन जैसे हम लास्ट वन थर्ड पे यानी एक्सट्रीम वन आउटर रेंज वन थर्ड पे चले जाते हैं, तो वहां पे ये मसल जो है डीप लेयर ऑफ द रेक्टस स्पाइनाई, दे बिकम स्ट्रेट, और फिर इनका जो रेजिस्टेंस है, इनका जो इस काउंटरिंग है अबाउट द इंटीरियर फोर्सेस, वो इतना जो है नहीं रहता, दैट्स वो यहाँ पे फिर डिमांड जो है ये बढ़ जाती है लेगेमेंट्स पर। और यही यही वजह है कि अक्सर हम अपने पेशेंट को जब बताते हैं कि जब आप कोई वेट लिफ्ट करते हैं तो अपनी दीज को बेंड करो, अपने बैक को बेंड ना करो, क्योंकि जब हम सपोज हम नमाज में जैसे कायदे में जाते हैं तो उस जगह उस पोजीशन में हमारी यहाँ पे स्टेबिलिटी जो है ये सिर्फ और सिर्फ लेगेमेंट्स पर होती है, और यहाँ पे मसल जो है दे बिकम साइलेंट जस्ट बिकॉज ऑफ दैट they are losing their orientation, their oblique orientation, they become straight. So इनकी ये posterior shear forces resistance ये नहीं होती,
और वहां पे अगर हम इसी पोजीशन यानी इंटीरियर बेंडिंग पोजीशन में हम होते हैं और इसमें हम वजन उठाते हैं, तो ये हमारी जो इंटीरियर शियर फोर्सेस है ये और भी इंक्रीज करेंगे, जिसकी वजह से देयर में भी डिस्क प्रॉब्लम हो सकती है, इंस्टेबिलिटी हो सकती है वेट लिफ्टिंग की वजह से। तो इसलिए अगर हम यहाँ पे इवन एटलीस्ट 2-3 kg वजन भी उठाते हैं, तो उसमें ईओ भी जो है प्रॉब्लम कर सकते हैं। दैट्स वाई इट्स मच बेटर कि हम वेट को लिफ्ट करें just by bending our knees and keeping somehow straight, yeah, keeping the lumbar span in the two-third of the inner and middle range, जहाँ पे जो है ये muscle जो है they are active, they are producing their stability, they are having their oblique orientation. So ये जो है बहुत जरूरी है अगर हम इसको को वजन उठाते हैं, so that should be with the straight back rather than bending the back, we should bend our knees. So knees को अगर हम bend करते हैं, तो एक्चुअली हम लंबर स्पाइन पे जो डिमांड है इसका जो वो हम थोड़ा सा कम कर देते हैं, एंड हेंस मसल के लिए आसान होता है, वहां पे स्टेबिलिटी नहीं होती. So due to the orientation play a key role in resisting the interior shear forces and give stability, and flexion it loses its orientation and hence unable to resist interior shear forces and leads to damage. These muscles need greater endurance and strength training, and that's why core muscle strengthening, that is a very integral part of any sports related or theory related training, and as well as any protocol of which if we are going to treat the lumbar region of any low back pain, so this core strengthening is the integral part of that protocol. So this is the deep layer of the erector spinae. यहाँ पे ये मसल जो है ये यहाँ से अटैच होते हैं स्पाइन से, यहाँ पे पोस्टीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन से और इलिक्रिस से भी होते हैं, और ये यहाँ पे फिर जाके ऊपर अटैच होते हैं. दे आर ओब्लिक इन नेचर, बट जैसे ही हम फ्लेक्शन बेंड हो जाते हैं, so they become straight, और इनका मोमेंट आर्म जो है ये कम होता है. दैट्स व्हाई दे आर बेस्ट फॉर प्रोवाइडिंग द स्टेबिलिटी, and that is the reason why superficial and deep layer they are separated. The superficial layer of the erector spinae, they are basically the prime mover for extension, while the deep layer of the erector spinae, they are the stabilizer of the lumbar region. So that is actually the compressive forces, and this is actually the erector spinae deep muscles, and ये इनकी प्रोड्यूसिंग फोर्स है, विच एक्चुअली द shear forces है इनका, जो ये काउंटर करते हैं इस लंबर रीजन का जो लॉर्डोटिक पोस्चर है, ये भी इंटीरियर shear forces थोड़ा सा क्रिएट करते हैं, प्लस यहाँ पे जो इंटीरियर मसल्स है वो भी प्रोड्यूस करते हैं इंटीरियर shear forces, और ये उसको बैलेंस करते हैं these deep layer of the erector spinae. So that is actually again the region of the three muscles, the erector spinae, muscles, the iliocostatus, longissimus, and spinalis. This is the lateral most one. This is the middle one, and spinalis is the medial most muscle of the erector spinae. अब आते हैं towards that was the posterior superficial muscle. So हमने डिस्कस किया है कि posterior muscles they can be divided into superficial muscles and the deep muscles. The superficial जो structures हैं, they can be the thoracolumbar fascia, the most superficial, and the erector spinae. Erector spinae is made of three muscles. This is the iliocostalis, longissimus, and spinalis. These three combined muscles, they are known as the erector spinae because they keep the span in the erect position. They provide stability, and they also extend the lumbar region. They are also the prime movers. Also, these erector spinae, they can be the deep layer or the superficial layer. So that was all about the posterior superficial muscles. Now we will talk about the posterior deep muscles. The posterior deep muscles, they are also known as the transverse spinalis group because these muscles, चाहे ये intertransversi है या ये rotators है,
या जो है ये सेमी स्पाइनलिस है, मल्टीफिडस है, ये तमाम मसल जो है ये स्पाइनस प्राइस से अटैच होते हैं एंड देन मीडियली जाते हैं एंड सुपीरियरली जाते हैं और ट्रांस स्पाइनस प्राइस पर अटैच होते हैं. सो दीज मसल्स they move upward as well as medially, so they are present between the spinous process and the transverse process, and that is the reason these are known as the transversospinalis group of muscles, and they are the posterior deep muscles. So three muscles are there in the lumbar region, which we consider as the posterior deep muscles, and this is the semispinalis is the most superficial one among them. The middle one is the multifidus, and the most deepest as well as the smallest muscle, this is the rotator. सो एक और कंसेप्ट कि अमूमन जितनी भी हम डीप जाते हैं टुवर्ड द स्पाइन जाते हैं, द लेंथ ऑफ द मसल जो है ये डिक्रीज होती है. तो जैसे एरेक्ट स्पाइन की जो मसल्स है ये पोस्टीरियर डीप मसल से लेंथ में ज्यादा होंगे. अब पोस्टीरियर डीप मसल्स अगेन इज मेड अप थ्री मसल्स, तो इसका जो सुपरफिशियल मेंबर है ट्रांसवर्स स्पाइनलिस ग्रुप और द पोस्टीरियर डीप मसल का विच इज द सीम स्पाइनलिस, ये लेंथ में सबसे ज्यादा होती हैं. फिर उसके बाद मल्टीफिडस ये उससे कम होती है सेमी स्पाइनलिस से, लेकिन रोटेटर से ये लेंथ में ज्यादा होती है मल्टीफिडस विच इज द मिडल पार्ट. एंड रोटेटर चूंकि ये सबसे डीप होते हैं एंड दैट्स व्हाई दे आर नॉट ओनली द डीपेस्ट, दे आर आल्सो द स्मॉलेस्ट मसल ऑफ आर द पोस्टीरियर लंबर मसल्स. Same concept if they are present in the semi-spinalis present in the thoracic area, they will be known as the semi-spinalis thoracis. And if they are present in the cervical area, they will be called as the semi-spinalis cervicis. And the muscles which are attached to the skull, they will be called as the semi-spinalis capitis. Similarly, multifidus, they are the lumbar multifidus, thoracic multifidus. लेकिन एक आगे हम डिस्कस करेंगे कि देयर इज डिफरेंस बिटवीन द thoracic and lumbar multifidus. The multifidus at the thoracic region, they are mostly involved in the rotation because they have more they are present, they are straight present, they are उनकी जो horizontal orientation है ये ज्यादा है as compared to the vertical orientation. We can say that कि जिस तरह क्या कि हम पहले में डिस्कस किया था क्लास में कि मसल जितना हॉरिजॉन्टली होगा उतना उसके लिए रोटेशन आसान होगी, और जितना वो वर्टिकल की तरफ नजदीक होगा तो उतना उसके लिए एक्सटेंशन आसान होगा. तो उनकी ओरिएंटेशन जो है ये मल्टीफिडस के इन द लंबर रीजन दे ये वर्टिकली ओरिएंटेड ज्यादा है. तो इसलिए ये वहाँ पे सेगमेंटल एक्सटेंशन यानी लोकल एक्सटेंशन दे देते हैं एज वेल एज ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर देते हैं. जबकि थोरेसिक रीजन की जो मल्टीफिडस होते हैं ये थोड़ी सी नंबर से ज्यादा जो है हॉरिजॉन्टल की तरफ होते हैं, दैट्स व्हाई दे आर बेस्ट फिट फॉर द दैट रोटेशन. इसी तरह ये रोटेटर जो है ये भी दो मसल्स दो होते हैं शॉर्ट एंड लॉन्ग में. सो द शॉर्टर वन दे आर नोन एज द रोटेटर ब्रेविस एंड द लॉन्गर वन इज नोन एज द रोटेटर लॉन्गस. सो पोस्टीरियर डीप मसल जो है जैसे हमने कहा कि इसमें थ्री मसल्स होते हैं. सीमी स्पाइनलिस दिस इज द मोस्ट सुपरफिशियल, इससे डीप जो है फिर मल्टीपिडस होती है और मल्टीपिडस से डीप जो है द रोटेटर्स. और ये तीनों मसल जो है सेमी स्पाइनलिस, द मल्टीपिडस एंड द रोटेटर्स, दे ऑल आर डीप टू द इरेक्ट स्पाइनाई एपिरोसिस. एंड मोस्टली जिस तरह हमने कहा कि इरेक्ट स्पाइनाई एपिनोरोसिस जो है या ये पूरी जो इरेक्ट स्पाइनाई मसल्स है ये पूरी इंटायर थोरेसिक रीजन इंटायर लंबर रीजन को एक्सटेंड करते हैं. तो ये जो मसल्स है दीज ट्रांसवर्स स्पाइनल इज ग्रुप ऑफ मसल्स और दीज पोस्टीरियर डीप मसल दे आर बेसिकली एक्टिव इन द रीजनल स्पेस, लोकली जो है ये वहां पे मूवमेंट कर देते हैं या स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर देते हैं. So they run generally from the dorsal sacrum and the ilium to the spinous process of the lumbar vertebra. And as well as जैसे हम ऊपर जाते हैं तो ये transverse to spinous process.
They also have separate physicals which run from the mammillary process of the inferior vertebra to the spinous process of the superior vertebra. Mammillary process is basically a small process and the transverse process of each vertebra. तो ये मसल्स जो हैं ये मल्टीफिडस ये मेमिनरी प्रोसेस ऑफ द ट्रांसवर्स प्रोसेस से अटैच होती हैं और फिर ऊपर जाते हैं एज वेल एज ये मीडियल जाते हैं टू अटैच टू द स्पाइनस प्रोसेस ऑफ द सुपीरियर वर्टेब्रा जैसे हमने कहा कि सुपीरियर एंड मीडियल जाते हैं the line of pull is more vertically oriented in the lumbar region. That's why they are best fit for the extension. While these multifidus muscle, unka jo line of pull hai, that is more horizontal. That's compared to the lumbar multifidus. That's why the thoracic multifidus they are best fit for the rotation rather than extension. Having greater cross-sectional area and more vertical orientation, it is best suited for extension by increasing lordosis and compression and posterior respect of intervertebral joints. So they are not only producing the extension at the local segmental area, but also they are providing stability at the segmental aspects. In the thoracic region, due to its orientation, they are best suited for the rotation. So these are the multifidus muscle and other muscles of the transverse spinalis group. You can see here यहाँ पे ये small muscle जो अपने ट्रांसफर से शुरू होती हैं एक वर्टेब्रा ऊपर जाके ये अटैच होती हैं दिस इज द रोटेटर ब्रेविस एंड लॉन्ग रोटेटर लंगस जो है ये सपोज इस यहाँ इस स्पाइनस पर शुरू होती हैं और फिर दो वर्टेब्रा ऊपर जाके यहाँ पर अटैच होती हैं या इस तरह भी हम कह सकते हैं कि ये जो रोटेटर ब्रेविस है ये यहाँ पे जिस स्पाइनस ट्रांसवर्स प्रोसेस से शुरू होती है और वहाँ पे जो नजदीक जो स्पाइनस प्रोसेस है यहाँ पर अटैच होते हैं ऑन द अदर हैंड यहाँ पे जो दूसरी मसल है मल्टीफिडस मसल है ये फिर थ्री या फोर वर्टेब्रा ऊपर जाके अटैच होते हैं ऑन द अदर हैंड सीमी स्पाइनलिस जो इनसे लेंथ में थोड़े से ज्यादा होते हैं ये अगर सपोज यहाँ से शुरू होते स्पाइनस ट्रांसवर्स प्रोसेस से तो ये सेमी स्पाइनलिस मसल जो है ये फिर पांच वर्टेब्रा या छह वर्टेब्रा जो है ये ऊपर जाके अटैच होते हैं सो rotators they just move superiorly and attach one or two vertebrae above. The multifidus they move superiorly and medially and attach three or four vertebrae above, while the semi-spinalis they move from their inferior attachment, they move superiorly and medially and attach to the spinous process five or six vertebrae above from its inferior attachment. So it means semispinalis length is more than the multifidus, and multifidus length is more than the rotators. And that's why rotators are the deepest as well as the shortest muscle of the lumbar posterior region. So they are the rotator and the transverse as well. Intertransverse are the short muscles which are present between the one transverse process to the next transverse process. So this is enter mean between and transverse mean between the transverse process. So this is one transverse series. This is the another transverse series. Intertransverse series या intertransverse muscle भी इसको कहा जाता है. Enter transverse viris this is the singular while enter transverse right जो है this is the plural इन तमाम को ये जो 1 2 3 जितने भी ये muscles है between two consecutive transverse process these are known as the enter transverse right. Now let's come towards the lateral muscle, which is a single muscle, the quadratus lumborum, which actually inferiorly attached to the iliac crest and ऊपर जाके ऊपर and as well as middle जाके ये फिर लास्ट रिब के नीचे अटैच होते हैं as well as transverse process of the L4, L3, L2 इस पे अटैच होती है. So these are quadratus lumborum, these deep to the rectus spinae and the transverse spinalis group of muscles. They are considered as the lateral portion, lateral muscle of the lumbar region. When acting bilaterally, serve as a frontal plane stabilizer. And if it is acting unilaterally, so the quadratus lumborum on the same side that will cause the lateral flexion of the lumbar spine.
and while the other side of the opposite contralateral side, they will be eccentric contraction, they will be stretching up the lumb of this quadratus lumborum. uh, why it is known as the quadratus lumborum? Because its muscle is exclusively present in the lumbar region, that's why that is lumborum. And another point is quadratus, that means that is if we look at this muscle, that is a rectangle like muscles which have four corners, 1, 2, 3, and 4 on both sides. So this muscle is known as the quadratus lumborum because present in the lumbar region. Why it is known as the lumbar region? Because this sharp area between the iliac crest up of the iliac crest to the bottom of the rib, the short, which is also known as the flank, this is known as the lumbus. In the old in ancient anatomy textbook, this word has been used the lumbus for this side sharp area, which literally means flesh or meat, sharp meat, and that is the reason everything in this region will be called as the lumbar muscle, the lumbar vessel, the lumbar artery, the lumbar nerves, the lumbar vertebra, the lumbar that. So because they are the just on the basis of this area, which is known as the lumbus. Nowadays, this lumbus terminology has been not present in the modern anatomy textbooks. So this quadratus lumborum, that is not actually the lateral bender of the quadratus of the lumbar spine, but it also control stability and control the rotation of the lumbar spine as well. So during lateral flexion and standing, the gravity will facilitate the movement, while the contralateral quadratus lumborum will control the movement by contracting eccentrically. If the pelvis is free, it means when we are in the open kinetic chain, so to move, so then the quadratus lumborum will hike the hip laterally till the pelvis and the frontal plane. And if we are in the closed kinetic chain, if the pelvis is not free, then they will be more bending at the ipsilateral side, and there will be no such hiking of the hip. So that is basically the situation. This is the normal symmetrical situation, the neutral situation. This is the quadratus lumborum, which is attached to the transverse process of the L4, the L3, the L2, and also the L1. No attachment to the L5 because this is inferior to this muscle. It inferiorly attached to the iliac crest and superiorly to transverse process, as well as the inferior surface of the rib. When there is closed kinetic chain, so open kinetic chain, so there is hiking up the that pelvis on the same side. We can see here this is asymmetrical position. If we look at the top of the iliac crest here and here, so this one is much superior than this one. Similarly, if we look at the head of that thigh bone, so this is equally acetibulum and this is the acetibulum. So again, this acetibulum is superior one. So it means when there is in the open kinetic chain, so the quadratus lumborum will contract unilaterally, so it will there will be hiking of the iliac crest or the pelvis. On the other hand, if we are in the closed kinetic chain, so there will be no such hiking of the pelvis. Pelvis आपको नजर आ रहा है कि ये neutral है. If we look at it, both side of the crest, they are symmetrical. यहाँ पे अगर हम इन दोनों acetibulum को देखें, so they are also symmetrical. But and यहाँ पे जो है इसने in the closed kinetic chain when the pelvis is not free, so there will be more bending on the same side. The same side अगर आप यहाँ पे देखें थोड़ी बहुत यहाँ पे bending हो चुकी है, लेकिन this bending is less than as compared to the magnitude of this lateral bending because the pelvis is free here, so there is more hiking. The pelvis is not free here, so there is more lateral bending of the lumbar spine here. Now let's come towards the interior muscles. We are done with the posterior muscles, which is divided into the superficial and deep. The superficial posterior muscles they can be divided into the thoracolumbar fascia and the erector spinae. Erector spinae is again divided into two, the superficial and a deep layer. And the entire erector spinae is made of three muscles, the iliopsoas longissimus and the spinalis,
while the posterior deep muscles, they are the transversospinalis group of muscles which attach between the spinous process and the transverse process. There are three in number. The most superficial one is the semispinalis. The middle member of this transversospinalis group of muscle is the multifidus, and the most deepest and the most that is smallest muscle, that is actually the rotator of this transversospinalis group of muscles. Then we discuss the lateral muscle, which is the quadratus lumborum. We discuss when it is bilaterally contraction of the quadratus lumborum that produces the interior stability and in the frontal plane. But if there is unilateral contraction of the quadratus lumborum, it depends that we are in the open kinetic chain. Open kinetic chain means the pelvis will be free to move, and if we are in the closed kinetic chain, when the pelvis is not free to move, so that depend on the situation. If there is open kinetic chain, the pelvis is free and they will be hiking up the pelvis and little movement at the lateral bending of the lumbar spine. On the other hand, if the pelvis is not free, we are in the closed kinetic chain, then the same side we there will be more and higher magnitude of the lateral bending, and there will be no such hiking of the pelvis. So next, now we are going to discuss the interior muscles. What are the muscles in this region and what is actually their main function? One, sorry to discuss, I just forget to discuss the pathology related to the quadratus lumborum. These muscles, the quadratus lumborum, they are very prone towards the spasm, and that's why um, when there is no such cause, when the person history will be कि जैसे आप उनको उनसे हिस्ट्री सब्जेक्ट टू एग्जामिनेशन लेंगे, उनसे आप जब हिस्ट्री लेंगे तो पेशेंट यही हिस्ट्री सुनाएगा कि कोई वजन हम नहीं उठाया था, कोई इस तरह जो बस सिंपली जा रहा था एंड सडनली देयर इज कुछ पेन से यूनिलेटरल साइड पे शुरू हुआ जो इलियक्रिस्ट की जो जगह पर पॉइंट करेगा कि यहाँ पे थोड़ा सा मैक्सिमम पेन है. So simply, if we do the soft tissue work at that muscle in that superior and medial direction, just starting from the iliac crest and moving towards the transverse process of the lumbar region and that oblique region from inferior to superior and from lateral to medial, the soft tissue work on the quadratus lumborum muscle, 3 to 4 sessions that will eventually uh, provide the relief and easiness and actually will give a huge amount of relief to the patient in the pain. So that condition is actually known as the quadratus lumborum dysfunction when the muscle is in the spasm position. Without any known cause, spontaneously जो है हो जाती है और स्पेसिफिकली पेशेंट को पेन उस टाइम पे ज्यादा होगा कि जब वो प्रोन ये सुपाइन लेटा हुआ है और वो अपना करवट बदलता है या वो सुपाइन लेटा हुआ है इस तरह वो लेटी पोजीशन से वो सीधा जो है उठने की कोशिश करता है तो उसको ये पेन होगा और इसका ये पेन जो है when he is standing, when he is walking, when he is sitting, when he is lying, उसको हर टाइम पे ये पेन होगा और just 3 to 4 sessions of that soft tissue work at that muscle will just provide relief in the pain and will lessen and decrease the intensity of the pain. So the interior muscles, they are two in number: the abdominal muscle and the psoas major muscle. And the abdominal muscles, they can be divided into four number. The superficial one are the most in the interior most muscle is the rectus abdominis, and then there is the external oblique, internal oblique, and the last one, the deepest member, is the transverse abdominis, which is also known as the wide belt muscle. Why it is known as the rectus abdominis? Because rectus mean the straight, abdominis mean up the abdomen. So the straight muscle of the abdomen is known as the rectus abdominis. They actually, we can see here that's white color, that is actually epineuritis, and there is no such contractile tissue here. So that's why when there is जब एक बंदा resistant training कर लेता है, so there is hypertrophy of this muscle, and that's why this red area they just increase in their mass, and there is while no such increase in the hypertrophy in this white area. और यही वजह है कि यहाँ पे सिक्स पैक जो है ये बन जाते हैं. So basically
इसकी दे आर इसके एक मसल जो है ये थोरेसिक रीजन से स्टार्ट होती है और यहाँ से फिर ये पेरिनियम यानी पेल्विस पे नीचे ये एंड अप होती है। तो ये जो एरिया है दैट 1 2 3 6 पैक जिसे कहा जाता है, 3 on this side and 3 on this side, this region actually that is then इसकी फिर बॉडी बिल्डर्स या जो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हैं, तो ये जो बिलीज है छोटे छोटे पार्ट्स, ये दोनों तरफ इसकी हाइपरट्रॉफी हो जाती है, हाइपरप्लीजिया एंड हाइपरट्रॉफी दोनों हो जाए, इंक्रीज इन मास which actually lead to the that six pack. So rectus abdominis is one of the prime flexor, and this is one of the important muscles which produce the movement, the interior bending. It's contained within the abdominal fascia. This is the abdominal fascia, which separate the rectus abdominis into section 1 2 3 4 5. Five on one side and five on the other. ये जो white color है, this is actually the abdominal fascia or the abdominal aponeurosis, which separate the rectus abdominis into section and attaches the rectus abdominis to the aponeurosis of the abdominal wall. So here this is the abdominal fascia, this is the rectus abdominis, this is the deepest muscle, the transverse abdominis. This muscle which is actually in the middle of these three, this is the internal oblique, and this entire external muscle, this is the external oblique. So these four muscles, the external oblique, internal oblique, the transverse abdominis, and the rectus abdominis, they are collectively known as the abdominal muscles. Another member of the interior muscle of the lumbar spine, this is the psoas major. So the psoas major and the abdominal muscle, they are collectively known as the interior muscle of the lumbar region. So this is the external and internal oblique. Together with the transverse abdominis muscle, this consists of the abdominal wall and forming the hoop around the entire abdomen, with the abdominal wall as the anterior aspect, while thoracolumbar fascia and its muscle attachment as the posterior aspect. This hoop plays an important role in stability of the lumbosacral spine stability. So this is the rectus abdominis. Then this is the internal oblique. External oblique, the direction of the external oblique is from medial towards the lateral, while the direction of the internal oblique is from lateral towards the medial, while the transverse abdominis muscle is completely horizontal in nature, while the rectus abdominis muscle is vertical in nature. Transverse abdominis muscle, that is also known as the wide belt, it is present entirely around the belly at that area, the belt area, and this is the deepest of all the abdominal muscles, and that play a key role in the lumbosacral stability. The transverse abdominis, due to its transverse orientation, mechanically control the movement of the sacroiliac joint through significant compressive forces, hence may be helpful in the sacroiliac joint laxity as well. The next muscle of the interior muscle of the lumbar region, this is the psoas major. There is another muscle, psoas minor as well, but this psoas minor may be absent in some of the people, and if it is present, there is no such big rule and important critical rule of the psoas minor, and that's why psoas major is only considered as the part of the this between these two, the major and minor. ये सॉस मेजर जो है ये नीचे जाके फिर यहाँ पे इलियकस मसल के साथ कंबाइन होके वन टेंडन जस्ट यहाँ पे ट्रोकेंटर पे अटैच होते हैं और या if we are going to discuss them in the hip joint, then these two muscles, they are known as the iliopsoas muscle, the iliacus and the psoas major, they are combinedly at the lower end known as the iliopsoas muscle. लेकिन above at that area, that is the iliacus muscle, जो iliac fossa से originate होती है superiorly, and this is actually the psoas major, जो यहाँ पे T12 and L1 L2 L3 L4 के बॉडी से अटैच होके नीचे फिर जो है जाके ये यहाँ पे ताइबूत पर अटैच होते हैं. So basically listed trochanter पर. तो ये जो muscles, if we are going to discuss that muscle, psoas major in the lumbar region, that will be just psoas major. But if we are going to discuss it at the hip joint, then we will discuss each term as the iliopsoas muscle rather than the
सॉस मेजर, बिकॉज यहाँ पर इलियकस इसके साथ फिर एक्टिव हो जाता है. So this is actually the psoas major, this is the iliacus muscle, and this is the iliopsoas. The psoas major run from the lumbar transverse process, the anterolateral vertebral bodies of the T12 to L4, and the lumbar intervertebral disc as well to the lesser trochanter of the that femur of the thigh bone. It courses inferiorly and laterally. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये न सिर्फ नीचे आ रही है, बल्कि ये यहाँ से medial to lateral आ रही है. It courses inferiorly and laterally, and distal tendons merge with that of the iliacus muscle, forming the iliopsoas muscles. The iliacus runs from the iliac crest over the pubic ramus to the lesser trochanter with the tendon of the psoas major. The role of the psoas major at the lumbar spine appears to be the buttressed forces of the iliacus, which when activated cause the anterior iliac rotation and thus the lumbar spine extension. Primary function of the psoas major muscle is to flex the hip joint, active only during the hip flexion, but play a key role in the lumbar spine stability by producing the lumbar compression during the hip flexion. जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि जितना ये उसका डिस्टेंस जो है ये ज्यादा होगा इंस्टेंट एक्सिस ऑफ रोटेशन से, उतना जो है उसके लिए आसान होगा टू मूव दैट रीजन. सो यहाँ पे अगर आप देखिए इस एब्डामिनल मसल जो है एब्डामी या रेक्टस एब्डामिनस, इसका डिस्टेंस जो है ये इंस्टेंट एक्सिस ऑफ रोटेशन से बहुत ज्यादा है, एंड दैट्स व्हाई दिस इज द प्राइम मूवर फॉर द लंबर फ्लेक्शन. अब ये जो सॉस मेजर है इसका डिस्टेंस मोमेंट आर्म जो है ये बहुत कम होगा, बहुत शॉर्ट मोमेंट आर्म, इसलिए सॉस मेजर इज बेस्ट fit for the stability in the lumbar region, but this muscle is active during the hip joint flexion, and iliopsoas is one of the rectus femoris के साथ जो है, this is one of the important muscle for the hip flexion. So just because of that longer movement arm, this rectus abdominis muscle, this is the prime mover for the lumbar spine flexion, while the other three muscles of the abdominal muscles as well as the psoas major, they play a very critical role, important role, a very crucial role in the lumbosacral stability. So that is actually mainly involved in the hip joint flexion, act only during, but play a key role in the lumbar spine stability by producing lumbar compression during the hip flexion. So some anterior shear is also produced when it is activated, and that anterior shear force is actually countered and balanced by the erector spinae deep muscles. So that was the end of today's session. We discussed the muscles of the lumbar region. We discussed the posterior muscles, the lateral muscles, and the anterior muscles. Thank you so much to all of you. Have a nice time.